Good morning, students. Today we will start exercise 2.6. Yesterday we have finished exercise 2.5. This exercise is based on multiplication of decimal numbers. How we will multiply 0. First question is find. First part is 0.2 is multiplied by 6. We will multiply number by number only without decimal. Decimal को छोड़कर नंबर के साथ नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 6 12 and in answer we will put decimal. How we will put decimal? यहाँ एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो आंसर में भी एक डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर विल बी 1.2. सेकेंड पार्ट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 4.6. फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 46 विदाउट डेसिमल. आंसर विल बी 368. देन वी विल पुट डेसिमल इन आंसर. देर इज डेसिमल बिफोर वन डिजिट, so we will put decimal before in answer before one digit. So 36.8 is answer. Third part is 2.71 multiplied by 5. First I will multiply 271 multiplied by 5 without decimal. The multiplication is 1355. I will put decimal. There are decimal before two digit, तो आंसर में भी डेसिमल दो डिजिट से पहले आएगा. आंसर विल बी 13.55. Fourth part is 20.1 multiplied by 4. We will multiply without decimals, number by number. 201 multiplied by 4. Answer is 804. और डेसिमल कैसे पुट करेंगे? अगर एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो आंसर में भी एक डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा. आंसर बनेगा 80.4. 0.05 multiplied by 7. We will multiply number by number. 5 sevens are there is no value of these zeros. 5 multiplied by 7 35, and I will put decimal before 1 2. Two digits before, the answer will be 0.35 before two digit. Sixth part is 212.02 multiplied by 4. I will multiply these two numbers without decimal. 21102 multiplied by 4. 84408 will be answer. I will put decimal before two digit because in statement there is given decimal before two digit. The answer will be 844.08. Now seventh part is 2 multiplied by 0.86. We will multiply number by number. 2 multiplied by 86. Answer is 172. We will put decimal before two digit because in question there is decimal before two digit. So answer may be 1.72. Second question, find the area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. Length of rectangle is given, breadth of rectangle is given. You have to find area of rectangle. The formula of area of rectangle is length multiplied by breadth. 5.7 multiplied by 3 centimeter. We will multiply without decimal. 57 को 3 से multiply करेंगे. Answer will be 171. Then I will put decimal before one digit because in statement there is decimal before one digit. The answer will be 17.1 centimeter square because area's answer always be in square. So answer will be 17.1 centimeter square. Third question is also based on multiplication. 1.3 multiplied by 10. अगेन वी विल मल्टीप्लाई नंबर बाय नंबर. 13 को 10 से मल्टीप्लाई किया 130 एंड वी विल पुट डेसिमल. हेयर इज डेसिमल बिफोर वन डिजिट, तो आंसर में भी एक डिजिट से पहले डेसिमल आएगा. 13.0 आंसर. द मेन आंसर इज 13. सेकेंड पार्ट इज 36.8 मल्टीप्लाई बाय 10. डेसिमल मल्टीप्लाई नंबर बाय नंबर. 368 मल्टीप्लाई बाय 10 3680. आई विल पुट डेसिमल बिफोर वन डिजिट बिकॉज इन स्टेटमेंट देयर इज डेसिमल इन बिफोर वन डिजिट, तो आंसर विल बी 368.0. It means answer will be 368. There is no value of 0. 3 part is 153.7 multiplied by 10. I will multiply these two numbers without decimal. 1537 multiplied by 10. Answer will be 15,317. There is decimal before one digit, so I will put decimal before one digit in answer also. 1537 1537.0. There is no value of 0, so answer will be 1537. Fourth part is again 168.07 मल्टीप्लाई बाय 10. वही नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. देन देयर विल बी आंसर 168070. दो डिजिट से पहले डेसिमल है, देन आंसर में भी दो डिजिट से पहले डेसिमल आएगा. 1680.70. डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं वी विल कॉल देम सेपरेटली 0.70 लाइक दिस. फिफ्थ पार्ट इज 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100.
I will multiply these two numbers without decimal. Answer will be 31100. I will put decimal before one digit because statement is given is like this. The answer will be 3110.0. There is no value of 0, so answer will be 3110. 156.1 multiply by 100. I will multiply number by number without decimal. The answer will be 156100. I will put decimal before one digit because in statement is like this. Answer will be 15610.0. There is no value of this 0, so the answer is this 15610. Seventh part is 3.62 multiply by 100. We will again multiply number by number 36200, and I will put decimal before two digit because in statement is given. So answer will be 362.00. There is no value of these two zeros. Answer will be 362. Eighth part is 43.07 multiply by 100, 4307. I will multiply number by number. Answer will be this. Now I will put decimal because यहाँ पे दो डिजिट से पहले डेसिमल है, तो आंसर में भी दो डिजिट से पहले डेसिमल होगा, तो आंसर होगा 4307.00 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर विल बी दिस. These four parts are homework. You have to do these parts, students, yourselves. Fourth question is a two-wheeler covers a distance of 55.3 km in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? Distance covered in 1 liter of petrol is 55.3 km. 1 liter का दे रखा है. You have to find the distance covered in 10 km. Distance covered in 10 km में जब हम greater to smaller to greater नंबर से पर आते हैं तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं. 55.3 मल्टीप्लाई बाय 10, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई की 5530 किलोमीटर आ गया. बट वी हैव टू पुट डेसिमल बिफोर वन डिजिट, सो आंसर विल बी 553 किलोमीटर. दैट इज द राइट आंसर. देयर इज नो वैल्यू ऑफ दिस जीरो. Now fifth question is find again multiply. There are two decimal numbers. We will multiply these two decimal numbers without decimals. 25 को 3 से multiply किया, answer will be 75. Now we will put decimal in आंसर्स. 1 और 1 दो डिजिट से पहले, 1 और 1 दो डिजिट से पहले डेसिमल है, तो आंसर में भी दो डिजिट से पहले